Paper 1 is the compulsory paper. Unit 1 is teaching aptitude. Teaching aptitude topics are teaching concepts, objectives, levels of teaching, memory, understanding and reflective, characteristics and basic requirements. The first topic, then learners characteristics of adolescent and adult learners, academic, social, emotional and cognitive individual differences. The second, then factors affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment and institution. ये third, then asla methods of teaching in institutions of higher learning. सेठी asla teacher centered versus learner centered methods, offline versus online methods, जोटारे कि आसीबो स्वयं प्रभा मूक एगुड़ाक. देन आसला पेपर 1 रो यूनिट 2. ता पूर्वर भी आहरी दीटा टॉपिक अछि. गोटेला टीचिंग सपोर्ट सिस्टम रे आसीबो ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड जोटा कि आसुची. देन आसला इवैल्यूएशन सिस्टम्स रे आसीरो आसीबो कोन ना एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. Evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovations in evaluation system. Then asla unit 2 research aptitude ro topics guda hochi kon first la research ro meanings, types and characteristics, positivism and post positivism ba post positivistic approach to research. Then asla methods of research re experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative method. Then steps of research, thesis and article writing re asibo format and styles of referencing. Then application of ICT in research, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म है. देन रिसर्च एथिक्स एगुड़ा गला रिसर्च एप्टीट्यूड भितर. देन आसीबो थर्ड यूनिट ला कम्प्रिहेंशन. से कम्प्रिहेंशन रे सेटा गोटे ही कम्प्रिहेंशन देथिबो, तार पांचटा क्वेश्चन देथिबो, तार आंसर देबाक पड़ी थाए. ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड. ओके. देन Unit 4 is communication. First topic is communication ro meaning, types and characteristics of communication. Then effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communications, classroom communication. Then asla barriers to effective communication, mass media and society etc. एगुड़ा होची कम्युनिकेशन रो टॉपिक गुड़ा. देन आसला यूनिट 5 वाला मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. फर्स्ट टॉपिक होची टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एगुड़ा सब रहा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भितर यूनिट 5 भितर. आहरी केते गुड़ाक अच्छी. देन आसला यूनिट 6 आसला लॉजिकल रीजनिंग आसो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, connotations and denotations of terms, classical square of opposition. Then asibo evaluating and distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies,
Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments. Then Indian logic, means of knowledge. Then प्रमाणज प्रत्यक्ष जोटा कि कह परसेप्शन. देन अनुमान इन्फरेंस उपमान कंपैरिजन शब्द वर्बल टेस्टिमोनी अर्थपति इम्प्लिकेशन and अनुपलब्धि non apprehension. Then next topic is structure and kinds of अनुमान inference व्याप्ति invariable relation. Then हेत्वाभास fallacies of inference बोली तक कह. Then आसीबो यूनिट 7 आसीबो डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन कौन कौन अच्छी ना सोर्सेस acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation रे आसीबो bar chart, histograms, pie chart, table chart and line chart and mapping of data, data interpretation, data and governance एगुड़ा को data interpretation ने जीवो. Then आसला information and communication technology जोटा कि ICT रही सेटा होची कोना सेठी टॉपिक गुडा को होची ICT रो general abbreviation and terminology, basics of internet, intranet, email जोटा कि इंटरनेट मेल बोली मध्य कहा जाई परिबो, audio and video conferencing, digital initiatives in higher education. Then ICT and governance एगुड़ा क्लास यूनिट 8 रे. देन आसीबो यूनिट 9 कोन अछि ना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. तार टॉपिक गुडा को होछि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. Then human and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on environment. Second topic. Then third topic is environmental issues गुड़ा कौन कौन ना local, regional and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste रे आसीबो solid, liquid, biomedical, hazardous, electronic. Then asla climate change and it is socio-economic and political dimensions. Then asla impacts of pollutants on human health. Then natural and energy resources आसीबो कोन कोन ना solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forests. Then natural hazards रे आसीबो and disasters रे कोडा कोडा ना mitigation strategy गुडा को आसीबो. Then आसले कोन ना environmental protection act 1986 रे environmental protection जो हेतला सेटा people's development and environment रो गोटे टॉपिक. Then national action plan on climate change. Then international agreements by efforts जोड़ा जोड़े रहिला कौन ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एलियंस एगुड़ा रहा पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट रो टॉपिक गुड़ाक. देन आसला लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम, institutions of higher learning and education in ancient India. Then evaluation of higher learning and research in post-independence India जोटा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और प्री इंडिपेंडेंस एरा ए भीतर भी जीवो. ओरिएंटल conventional and non-conventional learning programs in India. Then professional, technical and skill-based education. Then value education and environmental education. Last topic is policies
governance and administration. That's it.